Assalamu alaikum students. So I was going to share some video from YouTube, but because I have shared videos before और सबको accents समझ नहीं आते जो English के होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आपको lecture दे दूं ताकि आपको बेहतर समझ आएगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So basically parenthetical expression ये वो expression होता है जो कि extra information है basically एक sentence में. एक्स्ट्रा एज इन इस तरह है कि अगर आप उसको ओमिट भी कर देंगे अगर सेंटेंस में से तो फिर भी आपका सेंटेंस जो है ना इट विल मेक सेंस. फॉर एग्जांपल इनको एड ऑन्स कह दें आप, ठीक है, जो कि आपके सेंटेंस में आपने अपने एक्सप्रेशन को एनहांस करने के लिए आपका एक एक्सप्रेशन है, आपको लग रहा है ये बात नहीं है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है. इट्स जस्ट दैट इफ यू रिमूव दैट फ्रॉम अ सेंटेंस द सेंटेंस विल स्टिल मेक सेंस. दैट इज व्हाई इट इज एडेड विद कॉमास. यूजुअली पहले हम क्या करते होते थे, हम इनको पैरेंथेसिस में डाल के ब्रैकेट्स में, पैरेंथेटिकल होता है पैरेंथेसिस जो आपकी ब्रैकेट्स बोलते हैं जिनको, ठीक है, आप ब्रैकेट्स में डाल दिया करते थे इस इंफॉर्मेशन को एंड देन यू वुड कंटिन्यू योर एक्सप्रेशन दैट द वे दैट यू आर एक्चुअली, आप मतलब उस ब्रैकेट को आप हटा के आप एक्सप्रेशन को पढ़ते थे. बट अब अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए, अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए आप उस इंफॉर्मेशन को कॉमास में डालेंगे, ठीक है. सो इन दिस बेसिकली नोट्स, इन दीज नोट्स उन्होंने कहा है कि पहला जो एक तरीका है आपकी मेजर कैटेगरीज में वो आ जाता है डायरेक्ट एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस. इफ आई से सारा, लाइक सारा, सारा, कैन यू क्लोज द डोर. इफ आई रिमूव द नेम आई कैन जस्ट से दैट कैन यू क्लोज द डोर, लेकिन लिखने में यू हैव टू ऐड अ नेम, राइट, बिकॉज डायलॉग्स अगर हो रहे हैं, आपने किसी को डायरेक्ट एड्रेस करना है तो यहाँ पे सारा के बाद कॉमा आएगा. सारा कैन यू क्लोज द डोर नहीं, दोनों तरीके से देखें. कैन यू क्लोज द डोर सारा, जब बोलते भी हैं तो देखिए बोलने के अंदाज में भी एक रुकाव में रुक रही हूँ, ठीक है. सारा कैन यू क्लोज द डोर, तो ये जो आपका एक रुकना है इसके लिए हमने लिखने में कॉमा लगा दिया, ठीक है. कंजंक्टिव एडवर्ब्स आर दोज बेसिकली दैट आई टोल्ड यू, जो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं यूजुअली. देखिए ट्रांजिशन फ्रेजेस भी तो होते हैं. फ्रेज वो होता है जो कि क्लॉज नहीं होता. क्लॉज क्या होता है कि उसमें वर्ब भी होगा सब्जेक्ट भी होगा. फ्रेज ये होगा कि उसमें वर्ब नहीं होगा, सब्जेक्ट शायद हो लेकिन वर्ब नहीं होगा. फ्रेज फॉर एग्जांपल इस तरह कर दिया, टू बिगिन विद. अब ये एक एडवर्बियल फ्रेज आ गया आपके पास, आप इसके आगे कॉमा लगा देंगे, ठीक है. Similarly, look at these words: besides, consequently, finally, furthermore, however, in addition, in fact, instead, moreover. All of these words, you add them in a sentence for adding more effect. Look at these examples. The women, however, ate a bit later. ये किसी पाकिस्तानी शादी के लिए आप सेंटेंस देख लें, अक्सर यही होता है, द मैन ईट फर्स्ट, द विमेन हाउएवर एट अ बिट लेटर, ठीक है. अब हाउएवर का जो वर्ड था, दिस हैज बीन एडेड इन द मिडल. जबकि उर्दू में हम जबकि कहते हैं इसके लिए. नेवरदलेस द मैन स्टिल एट एट एग्जैक्टली 5 o'clock. लाइक आई सेड, ये एक पाकिस्तानी शादी का सिनेरियो लग रहा है, ठीक है, where the men ate before the women. Then you have another type which is called contrasting expressions. Contrasting expressions are those, and of course जहाँ पे एक comparison हो रहा है. Contrast क्या होता है? Contrast and comparison, ठीक है. The women, not the men ate at the French patisserie. Let's just remove. The patisserie होती है एक बेकरी होती है French, जो कि जहाँ पे आप baking goods होते हैं. Let's just add the wedding. All right, the baguettes, not the croissants, were the best sellers of the day. यहाँ पे भी हम French recipes हटा कर लिख लेते हैं. The samosas, not the kebabs. Kebabs were the best sellers of the day. अब यहाँ पे not the kebabs, जो not the kebabs वाला phrase है, वो आपने एक add on किया है. अगर आप इसको remove कर दें, the samosas were the best sellers of the day, फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सेंस बना रही है. बट यू वांट टू टेल अस द रीडर दैट किसके कंपैरिजन में, किसके कंट्रास्ट में ये बात हो रही है. इसको अगर आप रिमूव कर दें तो इट मेक्स इट्स मेकिंग सेंस, राइट. द समोसाज वर द बेस्ट सेलर्स ऑफ द डे, ठीक है, यूं कर दिया. लेकिन अगर मैंने ये एड ऑन किया, इट्स जस्ट एडिंग व्हाट, ओके, अनडू कर दें हम इसको. तो ये क्या कर रहा है, आपका एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है और हमें बता रहा है कि आपके कंपैरिजन की बात है. तो इस तरह से आपने पैरेंथेटिक एक्सप्रेशन को यहाँ पर यूज कर लिया. फिर कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं आपके पास. आई थिंक, ऑफ कोर्स, आई थिंक कर सकते हैं आप, ठीक है. आप जिस तरह इस तरह कर लें, ऑफ कोर्स द विमेन एट एट
his wedding. Of course, ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं, of course the women at, किसी ने सवाल पूछा, for example, did the women even eat at this wedding? And then you say, of course, they ate at the wedding. So of course will be then given a comma, and then you're going to say the rest or write the rest of the sentence. Similarly, I don't know why am I thinking of samosas only, the biryani. The chicken biryani. The chicken. Okay. Wow. Biryani, I think, was the best sellers. Was the best seller of the day. ठीक है, देखिए आप अगर इसमें से I think हटा दें अगर, या I believe देखिए I believe कॉमा the chicken biryani, किसी ने आपसे पूछा है कि शादी पे सबसे अच्छा खाना कौन सा था, ठीक है, what was the best food, and you say I think the chicken biryani, I think कॉमा the chicken biryani was the best seller. इसको एक और लिखने का तरीका ये है कि आप ये कह सकते हैं the chicken biryani, I think, you put commas here and here, आपने यहाँ commas लगा दिए, was the best seller of the day. ठीक है, ऑल राइट। फिर इसी तरह से अगर आप ये पंक्चुएट कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग में अगर लगा रहे हैं, ठीक है, आपने जिस तरह से हाउएवर, फर्दरमोर, thus, hence, तो वो आपने शुरू में लगा। ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू प्रूफ रीड योर एसेज, ये एक सेंटेंस आ गया। एक ये तरीका है कि आप मिडल में, जब आप मिडल में लगाएंगे तो आपको सेंटेंस के इधर भी लगाना पड़ेगा कॉमा, और उस वर्ड के जो एडवर्बियल आपके पास फ्रेज होगा, जो वर्ड होगा, उसके बाद भी लगाना पड़ेगा कॉमा। दो तरीके से, शुरू में आपको एक दफा लगाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, इन द मिडल यू विल हैव टू ऐड कॉमास, इन द स्टार्ट एंड एट द एंड, ठीक है। एंड देयर इज अनदर वे टू राइट इट एज वेल, लाइक दिस, इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू प्रूफ रीड योर एसेज, ऑफ कोर्स। ये दो तरीके, ये देखिए 3 तरीकों से लिखा जा रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट दिस। ऑफ कोर्स इन द स्टार्ट जस्ट 1 comma, when you write it in the middle you have to add them in the, इसी तरह से मैं आपको MCQs दूंगी, कहीं पे एंड पर होगा, कहीं पे बीच में होगा, कहीं पे स्टार्ट पे होगा, you need to figure it out that where exactly you have to add the commas, ठीक है। इसके अलावा I had some files, minute, लाइक आई सेड, आई थिंक ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि ऐसा फ्रेज होता है या ऐसा वर्ड होता है, अगर आप उसको रिमूव कर ले सेंटेंस से, द सेंटेंस विल मेक सेंस, बट यू ऐड दैट फॉर सम एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब तो थोड़े से डिफिकल्ट इंग्लिश हो सकती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आपको मतलब ना आए, बट इट्स फाइन, आई विल एक्सप्लेन दैट। माय फ्रेंड मैथस who lives near New York worked most of his career in construction. अब ये मैथ्यूस जो है उसकी आपको डेफिनेशन, मतलब उसकी डेफिनेशन ही, सॉरी, उसकी थोड़ी उसके बारे में बताया हुआ है। इफ यू रिमूव दिस फ्रेज who lives near New York, हटा के आप अगर बात करें my friend Mathis worked most of his career in construction, makes complete sense। आपका my friend Jane, my friend रिजवान चले, who lives near रहीम यार खान, ठीक है, उसके बारे में आपने एक रैंडम इंफॉर्मेशन दी, जिस तरह से मैंने आपको फादर वाली दी थी, माय फादर a cricket enthusiast watched cricket his entire life, या my father a retired colonel has always disciplined us, ठीक है, a retired colonel। अब ये कर्नल की इंफॉर्मेशन मैं किसे दे रही हूँ, क्योंकि वो डिसिप्लिन का एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जिस तरह यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, my father a retired colonel अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि माय फादर इज एक्सट्रीमली पंक्चुअल, और वो 6 बजे के बाद कभी भी नहीं सोते, ठीक है, लेकिन ये कर्नल वाली इंफॉर्मेशन मैंने बीच में दे दी है। व्हाई? बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू डिस्क्राइब दैट ही, व्हाई इज ही डिसिप्लिन्ड, बिकॉज ही हैज बीन इन द आर्मी, यूजुअली द पीपल दैट आर इन द आर्मी आर वेरी डिसिप्लिन्ड। तो आपका ये अगर हटा भी दें, माय फादर इज एक्सट्रीमली पंक्चुअल and he never sleeps in after 6 a.m. Still, this sentence is standing on its own, but this parenthetical expression was just added to tell about my father, ठीक है। Where were we? Where did the picture go? ठीक है। अच्छा, अब second sentence है, these drinks, especially the pop,
पॉप कहते हैं जो आपकी सोडा ड्रिंक्स होती हैं, कोक एंड 7 अप एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. These drinks, especially the pop, are not the best choices. Again, if you remove especially the pop, this is just another information. Next sentence, the dog can go, however, he needs to wear a leash. Leash क्या होता है? वो जो रस्सी सी बांधते हैं to walk a dog. ठीक है? Next is, we grew up in Colorado, so you would think we learned sooner, but we didn't learn to ski until we were in our 20s. Skiing is, for the students that don't know, when there's snow, और वो जो ski क्या करते हैं, क्या पहनते हैं उनको, blades पहनकर, they go down a mountain and that is called skiing. SKIING, ठीक है? SKIING, इस तरह से उसके स्पेलिंग है. So they're saying, so you would think that we'd learn sooner. अब ये जो जुमला है आपके पास, so you would think, कि आप सोचेंगे कि हम जल्दी सीख लेते, कि हम कोलोराडो में ही बड़े हुए हैं, कोलोराडो में शायद बर्फ पड़ती हो. आई हैव नो आइडिया. पड़ती है बर्फ कोलोराडो में? ठीक है, कोलोराडो में बर्फ पड़ती है. सो they're saying कि we grew up there, हम बचपन से कोलोराडो में ही रह रहे थे, and you would think कि वहां पे बर्फ पड़ती रही है, तो हमने कभी जाकर, but they're saying कि हमने अपनी जो skiing है, we learned it in our late 20s. In our 20s, sorry. ठीक है? The next one is, they wanted democracy, of course, so decided everyone should vote. ठीक है? Of course का sentence आ गया, बीच में add करने के लिए एक basically एक addition, add on कह दें जिसको. ठीक है? The lynx, actually a shy animal, almost went extinct prior to conservation efforts. The lynx is like I think it's a cat with very pointy ears. I really like looking at animals, so we're just gonna look at a lynx. It's a beautiful animal. Just look at how mighty it is. अच्छा, ये basically आपको lynx के बारे में बताया है, but आज आपकी biology की class भी है, so आप देख भी लें. ठीक है? All right. The lynx actually a shy animal. If you remove this information that says that lynx actually a shy animal, the lynx almost went extinct prior to conservation efforts. Conservation efforts होती हैं जब एक animal को conservate करने की कोशिशें की जा रही हैं, right? तो lynx के बारे में बताया कि वो बहुत shy animal है. Actually a shy animal, ये इसलिए बताया कि writer ये बताना चाह रहा है कि ये information हमें पता नहीं है. If you look at a lynx, you would never think that it's a shy animal. It looks like a ferocious animal. It looks like a wild animal, right? But the writer is trying to add on some information. इसी sentence में ये पूरा आपका जो expression है, actually a shy animal, इसमें आपने सिर्फ of course या however जैसे words नहीं ढूंढने. इसमें आपने देखना है कि sentence के बीच में कौन सी random सी line आ गई है, कौन से random से phrases आ गए. ठीक है? तो ये random से, अगर आप commas हटा दें यहाँ पे, the lynx actually a shy animal almost went extinct. तो ये actually a shy animal पूरा का पूरा आपका commas में चला जाएगा. This is all about parenthetical expression. I hope this is clear to all of you, but still, if you don't understand, you can message me and I'll be available at all times, inshallah. Okay? If I don't reply one day, next day I do reply. And that is all. Take care. Allah Hafiz.